Ladies and gentlemen, welcome to GameKheyl. I'm Naveed, and today we have the representative of one of the biggest communities in Pakistan. It's a little bit of a secret, but this community is growing pretty steadily, and these guys have been at this game for a while. And the game that I'm talking about is Clash Royale. These gentlemen have been playing this mobile-based application, which has turned into a phenomenon, especially inside Pakistan that I wasn't aware of. And this gentleman right here, Mr. Abdullah, he has been one of the best players from Pakistan, representing Pakistan and the Pakistani community in various international events. So, Abdullah, it's an absolute pleasure to have you here. Also, a little bit of a backstory. I've known Abdullah since we were kids, so it's an absolute pleasure to have a personal friend of mine here in this interview. And considering the fact that we have individuals watching this from Pakistan, हम थोड़ा उर्दू में भी जाएंगे थोड़ा इंग्लिश में भी जाएंगे ताकि everyone gets the best of both worlds. So, Abdullah, we'll start off with this. Sir, how are we doing today? First of all, thank you, Naveed, for calling me for this interview. It's really an honor to be here and to talk about a community that I guess no one ever has talked about before, which is a growing community, and it has a massive scale, and it depends on how we as Pakistanis and as a whole Pakistani community can take things forward in growing this even more, as the potential is really high. बिल्कुल ऐसा तो ही है अब्दुल जैसे कि यू टच्ड अपॉन द फैक्ट के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है वी हैव बीन इन टच विद a lot of different gaming entities, some of the communities here in Pakistan, and tell you what, there is so much potential, immense untapped potential that's out there. मगर वही वाली बात है कि शायद सर्टेन लेवल के ऊपर एक्सपोजर नहीं है या बहुत सारी रीजंस हैं. अगेन हम इस कम्युनिटी को लेके चीज़ों को डिस्कस करेंगे. However, when we talk about the Clash Royale community in Pakistan, when you talk about the creme de la creme, the top level gamers from Pakistan, your name is right up there in the conversation. So, Abdullah, basically, right off the bat, we would like to know a little bit about you, your journey in this game, and how's it going so far? I'd start off with shuru mein jab when I started playing, तो a friend of mine recommended me this game, and my brother as well recommended me this game, but he stopped playing after a week, so I was the one who stuck to it. I'm supposed to blame him for my addiction. तो start off किया था around four years ago. It was the game was like 1 year old, I guess. Around इतना ही time हुआ होगा game को release हुए हुए, so everyone was pretty much used to it जो internationally खेलते थे. Even पाकिस्तानी भी अच्छे level पे खेलते थे. There were some pretty good players. पुराने रिजवान हो गया, he's known internationally as well. इसाक हो गया. तो it started off with that बेसिक लेवल गेम प्ले होता था. लैडर खेलते थे, जो लैडर हर गेम का होता है, रैंक्स वाला जो होता है यूजुअली इन अदर गेम्स. उसी से शुरू किया था, छोटा मोटा खेला. एंड देन राइट ऑफ द बैट आई न्यू अबाउट competitive, और उसमें आया मैं. देन आई स्टार्टेड प्लेइंग सम पाकिस्तानी स्क्रिम्स होती थी आपस में. तो इट वाज अ रियली गुड टाइम, क्योंकि वो बिल्कुल वो था ना कि न्यू एक गेम में आ रहा है, बंदे की मोटिवेशन बहुत हाई होती है और हर चीज को लेके बिल्कुल ही यानी बहुत जबरदस्त टाइम था. तो टाइम पास्ट ऑन, पुराने प्लेयर्स रिटायर होते गए. जाहिर है सबकी अपनी अपनी लाइफ थी, गेम को कोई सीरियस नहीं लेता था, और मैं खेलता रहा. मेरे साथ और भी अभी कुछ हैं पुराने प्लेयर्स. शेरी है, अम्मार है. दीज गाइज आर लाइक नोन इंटरनेशनली एज वेल. बड़ी बड़ी टीम से हम लोग सब खेल चुके हैं. तो आई हैव अर्नड काफ़ी, यानी अनएक्सपेक्टेडली अच्छा खासा भी अर्न कर चुका हूँ. यानी एक गेम की लेवल पे, अगर पाकिस्तान की लेवल पे देखा जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख कमा चुका हूँ इस गेम से मैं, विच इज़ डिसेंट इफ़ यू टॉक अबाउट सिटिंग फॉर सम आवर्स एंड प्लेइंग अ गेम. तो ये है. बाकी अचीवमेंट्स पाकिस्तान में हम लोगों ने, यानी कुछ छोटी मोटी लीग्स हुई थी, कुछ छोटे टूर्नामेंट्स हुए थे. एक पाकिस्तान टेलीनॉर लीग हुई थी, PTL, वो जीता था मैं. फिर पाकिस्तान साइबर गेम्स PCG की हुई थी एक, वो जीता था मैं. एक गेम बर्ड हुई थी टेलीनॉर की, बहुत बड़ी हुई थी वो, यानी अच्छी खासी प्राइस थी, अच्छी खासी. डिफरेंट सिटीज़ से बुलाया था यहाँ पे. A lot of players from various cities came, like Hyderabad, even some villages came. So it was held in Beria University, and it was I would say it was the biggest event of Clash Royale in Pakistan, and it happened like 2 years ago.
तो इट वाज अ प्रीटी गुड इवेंट. आई कुडंट प्ले इट एज आई वाज आउट ऑफ पाकिस्तान, वरना तो मैं भी थोड़ा सा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन मिल जाती प्राइस की अच्छी खासी जो थी. So I guess that's my history in Clash Royale. I'm still playing it. I'm still playing internationally in various big leagues in versus big players, semi-pros, pros as well at some point. तो my aim has been always been कि पाकिस्तान में इस गेम को जो हूँ मैं लिटरली हर एक क्लैन में जाता था, ज्वाइन करता था, वहां लिखता था कि तुम लोग अपनी व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, कंपेटिटिव लाओ, ख्वारियां करता था. बट एट अ हम्म. पॉइंट वही बात है ना कि जब व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग लेस टाइम टू द गेम, आई कुडंट लाइक फोकस ऑन growing the community as much. But guys, there are some guys who are working hard now. अली रजा हो गया, इसी तरीके से फैसल हो गया, इस तरीके से और हैं. So I hope that we build this community even more and work and even make और tournaments वगैरह organize कराएं और इस community को awareness दें और लोगों को इसके बारे So there's one thing that you said, Abhi, कि a lot of gamers fall in and out of love for a game. मिसाल के तौर पे आपने कुछ अर्से एक गेम खेली, आपने बड़े हाई लेवल पे वो गेम खेली, एंड आफ्टर अ वाइल आपकी मोटिवेशन उस गेम को लेके थोड़ी कम हो जाती में. है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो कि अगर हमने टेक्निकल कम्युनिटी के जब प्लेयर से यहाँ पे बात की तो उन्होंने यही बताया कि बिगेस्ट रीजन है इसके इंसेंटिव ज्यादा नहीं है आपके पास हाई लेवल पे गेम खेलने का या इतना टाइम इन्वेस्ट करने का. जैसे कि लाइक यू मेंशन्ड कि यू बीन एबल टू मेक अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी प्लेइंग दिस गेम, बट you can only make that kind of money if you're playing at the highest of levels and you're consistently winning. अब आप टूर्नामेंट्स भी कभी खेलते हो तो जो प्राइस पूल होता है उसका एक मेजर चंक विनर के पास जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स परहैप्स विन लिटिल टू नथिंग, और स्पेशली थोड़ा नुकसान वाला सौदा हो जाता है अगर आपने अपना पैसा टूर्नामेंट में एंट्री फीस के तौर पर डालो. सो इन पाकिस्तान अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के एक प्रोफेशनल कंपेटिटिव सीन आपका तभी हो सकता है जब आपके पास कोई सस्टेनेबल इनकम की सोर्स हो. तो अगर हम बात करें क्लैश रॉयल कम्युनिटी की, तो आपके ख्याल में हाउ डू वी कीप द टैलेंट दैट वी हैव, एंड अगेन जो अच्छा टैलेंट आ रहा है उसको तो आपने मोटिवेट करना है, उसको तो आपने लेके चलना है, बट हाउ डू यू सस्टेन एंड रिटेन द टैलेंट लाइक समवन लाइक योरसेल्फ, या और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो पुराने अभी भी खेल रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज द इंसेंटिव फॉर देम एंड हाउ कैन वी मेक इट बेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी? I think one major role that our community can play is that सबको जो है ना, everyone is playing ladder. Ladder isn't as good. यानी अब ladder लोग नहीं खेलते क्योंकि ranks वगैरह doesn't matter in Clash Royale. It has no incentives या कुछ भी. They should shift to competitive gaming क्योंकि उसके अंदर जो है लीग्स वगैरह हैं, एंड इवन सम में बहुत सारी लीग्स हैं जो फ्री एंट्री होती है बिल्कुल. सो एवरीवन कैन प्ले टूर्नामेंट्स दैट आर फ्री, लीग्स दैट आर फ्री. बट वही बात है ना, अवेयरनेस जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ गेमिंग कम्युनिटी. Like if you have 150 players in a WhatsApp group of Clash Royale Pakistan, so it's their job to spread the word and tell everyone to join this particular server, Discord server, or join this WhatsApp group, ताकि कम्युनिटी बिल्डअप ऐसी ही ग्रो होती है. जब तक बंदा बताता नहीं है तब तक वो तो ज़ाहिर है उनके लिए तो एक गेम होता है. कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता जो है, वो उस चीज़ के अंदर ऐसे डाइव इन हो जाते हैं. तो उसके बाद दे दे स्टार्टेड टू सी के यार इतना कुछ था, आई नेवर न्यू अबाउट इट इवन दो आई हैव बीन प्लेइंग द गेम फॉर 3 to 4 years. Yani literally there are players that have been playing since like still 3 to 4 years, but they don't know anything about competitive. So it really saddens me to see this kind of like community in Clash Royale के हम लोग efforts इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं. कोई अपना सोच रहा होता है, छोटी community है तो not many people are willing to share their information of even like if I put it in simpler words, earning easily by playing a game. तो लोग अपने तक रखते हैं चीज़ें, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. बट इसको जो है आराम से ग्रो कर सकते हैं अगर सब मिलके ज़ाहिर है अपनी एफर्ट डालें चीज़ों को, यानी लोगों के अंदर अवेयरनेस डालें, स्क्रिम्स करें, छोटी छोटी स्क्रिम्स से स्टार्ट करें, छोटी छोटी टीम्स बनाएं. ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे ही एक व्हेन यू लाइक यू छोटे छोटे कतरा कतरा दरिया बनता है इन सिंपल उर्दू वर्ड्स. तो इस तरीके से ही मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता है. सही. जस्ट बिल्डिंग ऑन व्हाट यू सेड, आई मीन आपने जैसे बताया कि कम्युनिटी के अंदर रहते हुए लोगों की थोड़ी सी एप्रीहेंशंस होती हैं, थोड़ी सी समझें रीजंस होती है ऑफ नॉट शेयरिंग देयर नॉलेज और सीक्रेट्स ऑफ द गेम विद द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी. तो
अगर मैं बात करूं द कम्युनिटी इटसेल्फ, जैसे कि आपने बोला कि इट्स अ ग्रोइंग कम्युनिटी, इट्स नॉट वेरी बिग बट इट्स वेरी टाइटली नेट. आप लोगों का ग्रुप बड़ा एक्टिव रहता है व्हाट्सएप में. आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग देयर. हमने इनिशियली कोशिश की थी एक टूर्नामेंट रन करने की थ्रू दिस लैपटॉप, टू अ लिटिल और नो सक्सेस, बट अगेन इट वाज एन एक्सपीरियंस. इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के इवेंट्स और करने की कोशिश करेंगे. इंशाल्लाह. बट what I expected from what I got to really gauge from my experience in that community, कि आपस में लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है. बट साइमल्टेनियसली I would want you as a person who's very active in that community to give me your 2 cents on how the community is. And secondly, इस community को अगर अगला step लेना है, एक professional outlook देना है, तो what kind of initiatives will it have to take to grow? So just your thoughts on the community and what it should do. I think some of the core members that are present in that community, जैसे वही पुराने players हो गए, some of my Clash Royale friends, अम्मार, शेरी, अली रजा. एक हमारी एक टीम भी बनी हुई है competitive की. ऐसा नहीं है कि there is no competitive. We have our own Pakistani team as well that represents in various leagues internationally as well. So we have a platform set, we have a team set. It's our responsibility कि हम उसको किस तरीके से लेके जाते हैं. I think we need to incentivize more. I think we need to have sponsors for like to लोगों को encourage करेंगे ना आने के लिए. That when people see, even if they're getting 500 rupees prize, it's like 1 hour gameplay and 500 rupees. तो आएंगे, जो नहीं खेलते वो आएंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा खेलेंगे, हमारे साथ मिलेंगे. तो that's how we can like grow the community and encourage even more players to join Clash Royale and to play it competitively. So bringing in sponsors, bringing in tournaments, even small tournaments, small prizes, that matters a lot. यकीन करें, यहाँ मैं देख रहा होता हूँ वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे जो है लोग वही अकाउंट शेयरिंग करके भी, कुछ लोग ज़ाहिर है पे करते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए पे करके जो है पुशिंग कर रहे होते हैं लैडर की, रैंक्स की. I know that's unethical, but I'm just trying to explain कि even for a small amount of money they like do it. तो लोगों को मैटर करती है अगर वो 200 रुपीज, 300 रुपीज भी जीता. I think small tournaments can make a huge difference in the Clash Royale community in growing. Acha, I think there is one thing that I've figured out. We recently had an interview with Amu, who is basically Pakistan's in fact, one of the best Pakistan's King of Fighter players. And in fact, Street Fighter 5, and he actually came in third in world esports games. He told me about this community, not even a community, it's basically Pakistan Esports Federation. And I think with the group of people that you have, और आप लोगों को अगर लगता है कि you have a shot in international tournaments, so I would highly recommend the Clash Royale community to get in touch with them. And उनका इतना अच्छा मुझे basically from what I understand is कि they from your visa to your accommodation in the foreign country to you participating in a tournament, everything is covered by them. So I think these are the kind of initiatives. If they get connected to talent like yourselves, it can make a lot of difference. So I honestly think for everyone who's listening to this interview and thinks they're playing at a high level like yourself and like the rest of the Pakistani individuals that we've met, I think institutions like PESF will be amazing when it comes to development of gaming in Pakistan. So a huge shout out to PESF and to everyone who is a great gamer. Inshallah, अगेन आप लोग अपनी कम्युनिटीज को तभी ग्रो करोगे अगर आपके पास रोल मॉडल्स हो. टेकन के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने का एक बहुत बड़ा रीजन वाज द सक्सेस दैट अरसलान ऐश एंड देन अवैस हनी गॉट फॉर पाकिस्तान. तो इंशाल्लाह वी विल हैव मोर ऑफ दीज रोल मॉडल्स कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, एंड आई रियली होप के ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PESF, लाइक esports marketing Pakistan, जिनके साथ हमारा रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, एंड ऑल्सो विद इवन esports team like Salt esports, I think these are the organizations which are take Pakistan to the next level. And again, nothing but best wishes for all of them. Abdullah, coming back to the Pakistani scene, अब एक चीज ये है कि the game itself अगर हम बात करें, या फिर गेम की भी अगर हम बात नहीं करें, हम सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड गेम्स की बात करें, तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है गेम्स के साथ. या ये कहा जाता है यार ये तो बच्चों वाली गेम है, या ये कहा जाता है कि एनिमेशन अच्छी लेवल की नहीं है, या आप गेमर ही नहीं है अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे हैं. And knowing you and the kind of history we have, you're one of the best gamers, period, when it comes to any games. So
चाहे वो फीफा हो, चाहे वो हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स खेल रहे हो, CS खेल रहे हो, आई हैव नोन यू फॉर दैट लॉन्ग, तो मुझे अच्छा आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. तो व्हाई डू यू थिंक कि व्हेन इट कम्स टू सेल फोन बेस्ड गेम्स इतना स्टिग्मेटाइज लोगों को किया जाता है या इतना डराया जाता है? सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? आई थिंक इस चीज का सबसे ज्यादा यानी वो वजह इस वजह से होती है बिकॉज पीपल थिंक लाइक you're just wasting time on your phone, you're wasting time plus effort of like you're ignoring every single thing and you're getting nothing out of it. That's how people like उसको वो कर देते हैं, स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि बिल्कुल ही इससे कुछ भी नहीं मिल रहा आपको. एंड इसी वजह से आई वुड रियली लाइक अप्रिशिएट कि ये फ्री फायर के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, माउंटेन ड्यू स्पॉन्सर कर रहा है, एन जेन ई स्पोर्ट्स, नेक्स्ट जेन ई स्पोर्ट्स, इनको पूरा स्ट्रीमर्स के थ्रू ये लोग प्रॉपर जो है स्ट्रीम कर रहे हैं. नाउ फ्री फायर एंड पबजी ये बहुत अच्छे लेवल पे आई कैन से कि पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है और ग्लोबली भी इनको रिकग्नाइज किया जा रहा है. तो इट्स रियली गुड इनिशिएटिव. और यानी वही डिपेंड करता है ना कि किस तरीके से उसके लिए एफर्ट्स की जाते हैं. अब हम लोग के ऊपर है, हम लोग जब अगर लाइक इफ वी हैव द प्लेटफॉर्म, इफ वी हैव दीज कंपनीज हु कैन लाइक जॉइन हैंड्स विद अस, वी कैन प्रोवाइड देम एवरीथिंग दे नीड टू नो टू ग्रो दिस कम्युनिटी, टू इवन लाइक जो भी उनका पूरा प्लेटफॉर्म पूरा फॉर्मेट होता है वो हम सब आसानी से बता सकते हैं. बट वही है ना कि कनेक्शंस आर नीडेड एंड फॉर दैट अवेयरनेस इज नीडेड, ताकि उनको पता हो कि यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के सेल फोन से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, बट दे कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम द गेम्स दैट दे आर प्लेइंग ऑनलाइन ऑन सेल फोन्स. तो स्कोप तो हद से ज़्यादा है. इट्स जस्ट हाउ यू टैप इट, हाउ यू लाइक use your skill for it. तो that totally depends on the individual. तो इंशाल्लाह अगर इस पे मेहनत करें तो everyone can achieve a lot. अच्छा, so you've touched on one keyword जो कि मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे लोग जिस इंटरव्यू को देख रहे हो वो उसमें इंटरेस्टेड हो, and that is the word being earning. And for a lot of people थोड़ा भी पैसा अगर होता है तो दैट गिव्स यू अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन टुवर्ड्स कि यार चलो मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक रिटर्न उसके अगेंस्ट मिल रहा है. तो when it comes to this game, how do you think a person can perhaps make some sort of money? या क्या वो अपने कंटेंट को स्ट्रीम करे तो उसके थ्रू वो पैसा कर सकता है, या वो टूर्नामेंट्स में compete करे? What do you think is that way that could essentially make a person stick around and kind of incentivize what they do? अच्छा, इन क्लैश रॉयल देयर कैन बी वेरियस वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट करें. स्ट्रीमिंग कैन बी मोनेटाइज्ड इजीली बिकॉज ऑन ट्विच देयर आर अ लॉट ऑफ सबसे ज़्यादा इन द प्रीवियस मंथ्स और सो क्लैश रॉयल हैड द मोस्ट स्ट्रीमर्स आउट ऑफ ऑल द गेम्स. मैंने देखी थी स्टैट्स वगैरह. एंड देन सेकंड चीज़ है कि इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल एंड सम ऑफ द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल, there are teams internationally that provide contracts, monthly contracts. तो जैसे $20 आपको मंथ के मिल रहे हैं कि when you're playing matches, यानी मुश्किल से 1 घंटे का मैच, 1.5 घंटे का मैच होता है, और एक महीने में कितने मैचेस होते होंगे? 15 मैचेस होते होंगे, 20 मैचेस. that's nothing. And you're getting contracts starting from $15 and goes up to $70-80. that depends on the team and the level of the team. तो तरीका वही है ना कि you have to grind, you have to give some time to the game if you want to earn. बैठे बिठाए it becomes hard, but at some point when you're like जब stable हो जाता है, when you know how to play, when you know the micros and the macros of the game, तो फिर it becomes easier. You can find a team, you can find contracts, you can earn a decent amount के छोटा मोटा होके जो ये नहीं चाहता है बंदा के easy money. Then like you can easily get all of these incentives. Acha, I think there's another thing which a lot of people tend to miss, and that is your own marketability. So I've seen you being very active on platforms like Twitter within the community. So how important is it as a professional or semi-professional esports athlete to engage yourself with on different platforms? I think this is something that I would really want you to stretch on, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बहुत सारी जो कम्युनिटी में लोग मौजूद हैं वो शायद अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, या उनको लगता है it takes a lot of effort. So
How do you balance that, and how do you think that people can actually amplify their own impact through that? I think socials play a vital role in recognition and the awareness कि अगर आप उस चीज को टैप करके उसको नहीं टारगेट करोगे. फॉर एग्जांपल माय ट्विटर वाज लाइक जो नॉर्मल ट्विटर होता है on my personal life. But then I started playing the game competitively. Then people got to know me. Twitter पे I started following semi-pro players and teams and managers. तो इसी तरीके से I had to change my personal Twitter into a game profile. I have written my achievements in the bio. That's how people recognize ke हाँ, he looks like a player. He has plenty of followers. Alhamdulillah, I have like 1K plus followers, and I'm following like 200 to 250 people. So it Mm, shows a good image of a player. Okay, he has followers, he has achievements. So it's easier to recognize and filter them from the rest of them, from the rest of the players. So mm, socials, whether it be Instagram, whether it be Twitter, whether it be YouTube, like mm, if you're using Instagram or YouTube for uploading videos, if you're a player plus a streamer जो अपना mm, गेम प्ले छोटी छोटी वीडियोस बना रहा है या गेम प्ले की वीडियोस या लैडर पुशिंग की या मैचेस की, तो इट मेक्स अ mm, ह्यूज डिफरेंस कि आपकी आपके बारे में दिखता है, लोगों को आपका गेम प्ले नजर आता है. तो it would most definitely play a huge role if people start using their socials as a game profile mm. to get themselves recognized internationally and Pakistani in Pakistani community as well. I think that's something very important that people need to recognize. कि again उर्दू में हम इसको यही कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है. So बिल्कुल. as long as you make yourself visible to everyone, तो again कभी कभी ऐसा भी होता है कि there is an organization or a sponsor looking to get behind someone, और वो उसी के पीछे आएंगे जो उनके लिए सबसे ज़्यादा viable option होगा. So if you're someone who is presentable, you're someone जो अपने आप को अच्छी तरह से carry करता है, opportunities will come to you automatically. But what you have to do is to make yourself available in the right place at the right time. So again, that is something that is very excellent that you've touched on. Abdullah, there's a few more things that I would like to ask you. Firstly, again, community जो है वो एक या दो लोगों से नहीं बनती. Community is something that takes time, that takes effort, and again, there are individuals who must have spent countless hours trying to build what is now the Pakistani Clash Royale community. So we will have, I'll just pass on the microphone to you virtually for you to recognize as many individuals as you want who you think have helped in building the community in Pakistan, and maybe a few gamers or maybe a few streamers out there from Pakistan or abroad who you think deserve a shout out or maybe are the ones to keep an eye on. So if there are any shout outs, now's the time. I would start with the team Pakistan that is like playing international tournaments, that is giving the international people recognition that Pakistan is also a country that has Clash Royale players, that has talented players. So first of all, मैं team Pakistan को shout out दूंगा. You can find our page on Twitter as well, our team Clash Royale team page. And then we have Park Esports, which is our Clash Royale team, जो competitive leagues खेलती है, ये वो खेलती है. International leagues are different and then competitive leagues are different. तो जैसे वही होता है ना कि वर्ल्ड कप होता है और एक यानी यूएफएल चैंपियंस लीग वगैरह होती है, तो इसी तरीके का Mm, होता है. इंटरनेशनल में दे हैव ऑल द कंट्रीज एंड इन डिफरेंट लीग्स देयर आर वेरियस मिक्स टीम्स. तो ये पाकि स्पोर्ट्स को शाउट आउट दूंगा. आई वुड गिव शाउट आउट टू वेरियस प्लेयर्स हु हैव बीन वर्किंग हार्ड, हु हैव लाइक बिल्ड अप द कम्युनिटी एज वेल. शेरी हो गया, अम्मार हो गया, साद हो गया, रिजवान हो गया, अली रजा हो गया, कुमैल, हम्माद, सुहेब. These are there are a lot of names in these lists who have like given other people recognition of Pakistani talent, क्योंकि ये हाई लेवल पुशर्स हैं, रैंक्स जिनके बहुत अच्छे हैं यानी ग्लोबली. हम्माद का रैंक बहुत अच्छा है, ही इज लाइक टॉप 100 अ लॉट ऑफ टाइम्स ग्लोबली. एंड इसी तरीके से कुमैल का रैंक अच्छा है, सुहेब. तो I think these guys deserve a shout out, and whole of Pakistani community as a whole, यानी as a group, they all deserve a shout out as well. Clash Royale की community WhatsApp group जो होता है, Ali Raza has played a huge role in creating a WhatsApp group.
And GameKheyl would also, inshallah, play a huge role in creating the Discord group as well, active Discord group. तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. बाकी मैं अपने भी सोशल शेयर कर लेता हूँ. अब्दुल्ला अकील, इट्स अब्दुल्ला अकील है ट्विटर पे, and it's really active on Clash Royale stuff. So Ali Raza is a streamer as well, and there are various streamers that even I don't know, but वो stream कर रहे हैं पाकिस्तानी community में. I can see that in the WhatsApp groups. So I think that's about it regarding the shoutouts. So again, for everyone that Abdullah has mentioned, agar इनके socials, Twitters पे मौजूद हैं, so we're just going to tag all of them there. Also, Abdullah's own links for his socials, wherever he is active, you will find those down in the description. So make sure to go and follow him if you can. Give him some love and let him know that the Pakistanis who are watching this, and even the international guests that we have, you are getting behind the gamers, the true OGs of different communities, and giving them the best push that they could need, and even just a brief interaction with them